Hello, dear learners. This is Dr. Sunil Chandan Shive here. I welcome you all in the certificate course of Basics of Stock Market Operations, which is conducted by the KJ Somaya College of Arts and Commerce. So, in this video, we are going to discuss, we are going to understand a very essential topic or tool which are used in the stock market, and that is chart or the various types of chart. So whether you are a student of the finance, or you are just curious to understand the basic finance related concept or the stock market related concept, then definitely this video is helpful for you. So in this video, we are going to learn, we are going to understand the chart and the various type of chart popularly used in the stock market analysis. Okay, so let's get started with the chart. So this is about the course outcome. So at the end of this course, the learners will able to understand the concept of chart. What is chart and what are the significance of chart? Yes, definitely the chart are used. Chart is a graphical tool and that are used to analyze the movement into the price and the volume of the stock. So that we are going to understand here. Second important uh, outcome is at the end of this session you will able to identify and differentiate between the major types of charts. Yes, there are different types of charts are there, like line chart, bar chart, and candlestick chart. So you will able to understand the what are the important difference in between this chart with its features, strength, and limitations. And the third important outcome is about analyze the component of each type of chart. Yes, in every chart there are different components are there, like the opening price, closing price, the high price of the day, low price, and generally the price fluctuation into the stock prices. So that the different component of the chart you will able to understand at the end of this sessions. And the last, the fourth important learning outcome is you'll able to apply the chart analysis technique to take investment decisions, whether for the short-term trading or for the long-term investment planning. So these are the learning outcome of this course. Now, let us understand with the meaning of chart. So as I told you earlier, the chart is a graphical presentation. Yes, the chart is presented with a graph, and it is a graphical presentation of the price or the volume. It means whatever the fluctuation or the changes into the prices that are presented with the help of graph, with the help of chart. Okay, so second definition, as you can see, the chart is a graphical presentation of how the stock prices are moving, how the stock prices are changing over a certain period of time, and that is represented with the help of the chart. Okay, so this is about the chart definition. Now as you know that the second important thing is about the different types of chart. Yes, there are many types of charts are there, but here we are going to learn a very major uh, types of chart and that are popular and mostly used by the traders and the investors for taking the investment and the trading decisions. And these popular charts are like a line chart, second bar chart, and third is about candlestick chart. So one by one, these different types of chart we'll discuss in detail. So let's start with the first type of chart, that is a line chart. Okay, dear learners, the line chart, as you can see, line chart क्या होता है? Line chart is drawn
by simply connecting the closing price of the stock. So at the end of the day, the closing price is there. At what price the stock has closed at 3:30. So all this closing price we are just connecting, we are just joining, and we are getting the line chart. The line chart help the investors or the traders to identify the overall trend of the stock market, overall trend of the stock price, whether the stock price is moving upside, downside, or whether it is a consolidating in a certain period of time. So generally you can identify the overall trend of the stock price with the help of line chart. So line chart, as you can see here, the purpose, with the help of that you will able to identify the price trends, whether it's upward, downwards, or the consolidations. So generally these line chart are more popular in the beginners because you will easily identify the trends, and it is very important and ideal for the long term investors, because the long term investors are looking only at the trend, long term trend, and accordingly they are taking the investment decisions. So therefore here the line chart is more popular into the beginners or for the in the long term investors. So one of the limitations of this line chart is about the it doesn't show the intraday fluctuations, because here in the line chart we are just focusing on the closing price of that stock, and we are just connecting all these closing prices of the different the time frames, and we are getting the line chart. So therefore it doesn't show the more intraday fluctuations in the price of the goods and price of the stocks, so which can be crucial for the short term traders. So therefore mostly short term traders are not using this the line chart. Okay, so as in the next slide you can see, so there are around 10 days are there. So every day the price movement is there, price fluctuation is there, and at the first day the price close at this level, so we are making the dot this. On the second day there are certain changes into the price of the stock, and ultimately it is closing at this level. Okay, so we are just doing the dot, and on the third day again the price open at 9:15 and fluctuating, and at 3:30 the closing at this level. This is for the third day. The fourth day again there are certain fluctuation into the stock prices and the closing down. Okay, it's opening little high and closing down at this level. So what we are doing here, we are just we are just connecting these closing prices. Okay, and we are getting the line chart. Okay, हर एक डे की क्लोजिंग प्राइस जो होती है उसको हम कनेक्ट करेंगे, उस पॉइंट्स को कलेक्ट करेंगे, and accordingly we can get the line chart. So as overall the trend you can see here of this stock, it's upward trending, it's upward trend, it's going upside. Now this line chart will understand with the help of graph in the actual market. So I'm going to open the one of the important stock, that is Tata Motors. I'm going to open in a large screen. So here you can see the multiple options are there. This is the Tata Motors का stock है ये, and this is the different types of chart you can see here. And I'm going to click here. You can see there are multiple charts are there. The bar chart, candle chart, hollow candles, columns, line chart, this line chart, then step lines, Heikin-Ashi, Renko. There are different types of charts are there. So what we are going to do, we are going to select here the line chart. Okay, the line chart look like this, and if I'm going to select the time frame of what the 1 month period,
and just you can see in the long run how the price of this Tata Motors is going to trend. For the long period of time, it was trending in between 100 to around around 10 rupees, right? But after that, it is rising upside, then again going down. In the corona time, you can see the stock has come down from 550 to around 91, 90, 84 rupees. And after that, you can see it's continuously rising after the corona, after the 2020, it's rising continuously. So here, this is the monthly time frame. So if I'm going to convert into the weekly chart, so you can see since this, you can see it's upward trending after the corona period. Now I'm going to select the day time frame. Again, you can see from 2020, it's continuously moving upside. Yes, there are certain fluctuations are there. So in that way, what we are doing here in the line chart, we are just connecting the closing price of that day. So as you can see, we'll take an example from the 6, right? तो 6 अगस्त को ये चार्ट कौन से प्राइस पे क्लोज हुआ था देखो, इट्स अबाउट 653, 6 अगस्त को. द नेक्स्ट डे इट हैज क्लोज्ड 17 को क्लोज कहाँ हुआ 643. तो ये क्लोजिंग प्राइस हम कनेक्ट कर रहे हैं, राइट. द नेक्स्ट डे अराउंड 8 अगस्त को ये स्टॉक क्लोज हुआ था around 634.88. Then this stock has closed on 9 or 10 को छुट्टी थी, maybe Saturday and Sunday. Then 11 August, this stock has closed at the price of 653. So we are just connecting this closing price of that day and we are getting the line chart. So the line chart generally doesn't show the intraday price movement. Okay, generally here we are just connecting the closing price of that day and we are getting the line chart, and accordingly we can identify the trend. तो अगर आपको short term trend find out करना है तो you can see here, देखो since what 8 August the price of the stock Tata Motors is rising. It means that we can see the short term के लिए भी क्या है, it's moving upside. Okay, so in that way we can understand the line chart. Then we'll discuss about the second important type of chart, and that is the bar chart. Okay, so bar chart is similar to the line chart, but it is more informative than the line chart, because line chart में हम क्या करते हैं, we are just connecting the closing price of that stock of that day and we are getting the line chart. But here the line chart is more informative because the more information यहाँ पे आपको देखने को मिल सकती है of that day. Like the bar chart is in the shape of vertical line. You can see here, this is the green line. You can see ये आपका कौन सा चार्ट है, बार चार्ट है, which is presented with the vertical line with two horizontal lines. यहाँ पे दो horizontal lines है. This is to the left side and this is to the right side. So top of the vertical line is showing the high price. मतलब उस दिन वो स्टॉक ने कितने का हाई बनाया या फिर ये स्टॉक मैक्सिमम कितने प्राइस पे गया था. ओके, हाई प्राइस ऑफ द डे ऑफ द स्टॉक. देन द bottom point of that line shows the lowest price of the stock on that day, okay, or on that the certain time period. It can be the ये bar chart can be of any time period में आप देख सकते हो, 2 minutes, 3 minutes, 4 minutes, 5 minutes,
वन डे, मंथ, वीकली, आप अलग अलग टाइम फ्रेम में इसको देख सकते हो. सो द बॉटम ऑफ द लाइन, वर्टिकल लाइन शोज द लोवेस्ट प्राइस, एंड ये जो द राइट टिक shows the opening price, and the right tick above shows the closing price. It means here what happened, this in the barred green line we can see the price open at low and close at higher. Okay, so it means the price has increased. So this is the bullish chart, this is the bullish bar. Okay, because the price has increased, it is open at low and close at high. So this is the bullish bar chart. Then second is about the bearish bar chart. You can see here in the bearish bar chart also, as you can see, there are four important components. The one is the top of the vertical line is a high price, bottom of the vertical line is a low price, but the difference is here in the green bar. What happened, the price open at high, maybe suppose the price open at the 100 and the close at around 60 rupees, right? It means the price has decreased from 100 to 60. So this is represented by the red color. So therefore here the bar chart gives the more information as compared to the line chart. Line chart में हम बस closing price को track करते हैं, लेकिन बार चार्ट में हमें ये इंट्राडे के जो प्राइस मूवमेंट है जनरली ये देखने को मिलते हैं, लाइक ओपन कितने प्राइस को हुआ, ये प्राइस ने कितने का हाई बनाया, कितने का लो बनाया, और वो स्टॉक एट द एंड ऑफ द डे कितने प्राइस पे क्लोज हुआ, राइट? इन दैट वे the bar chart is more informative than the line chart. So now we'll understand this line chart, sorry, bar chart with the help of graph. So this is the Tata Motors का stock है, as you can see here. Now I'm going to convert this line chart into the bar chart. Just I'm going to click here, and as you can see the multiple options are there. Okay, so I'm going to click here. Now you can see the movement into the stock prices of the Tata Motors. I hope screen is visible to all. Okay, ये देख सकते हो आप. यस, तो ये देखो, जो आज की डिजिट 18 अगस्त को, दिस इज प्रेजेंटेड बाय द रेड कलर. रेड कलर में मतलब आप देख सकते हो, दिस इज द बेयरिश बार चार्ट है ये. यहाँ पे ये जो ओपन हुआ है, देखो ओपन एट हाई अराउंड 677 एंड क्लोज एट समथिंग हियर 675. ओके, मतलब ओपन हुआ एट हाई प्राइस एंड क्लोज हुआ एट अ लो प्राइस. एंड द टॉप ऑफ दिस बार वर्टिकल लाइन इज अ हाई प्राइस. ये स्टॉक कितने हाई प्राइस पे गया था, अराउंड 685.02, और ये स्टॉक कितने लो प्राइस पे गया था, अराउंड 672.90 समथिंग. So this is the bearish bar chart. Then again yesterday you can see, yesterday मतलब जब 14 अगस्त को, इन बिटवीन 2 दिन 3 छुट्टी थी, तो 14 अगस्त को भी ये बेरिश बार चार्ट है. एज यू कैन सी द ओपन यहाँ पे हुआ है समथिंग 665.90 एंड क्लोज हुआ है अराउंड 664.53. इसने हाई ये बनाया 666.58 एंड लो ने कितने का बनाया देखो 657.70. So this is the bearish bar chart on the 14 August. Then this is the 13 August को देख सकते हैं. This is the green bar chart. तो यहाँ पे क्या हुआ है कि on 13 August को ये प्राइस ओपन हुई है एट 657.19 और क्लोज हुई है एट द हाई प्राइस. ओके, it's around 663.85, and this is the high price of that day.
the vertical top line, and the bottom of that bar is at 655.82. मतलब यहाँ पे you can see the bar chart is more informative than the line chart. तो ये जो टाइम फ्रेम है, अलग अलग टाइम फ्रेम में इसको आप देख सकते हो। जैसे कि अगर आप इंट्रा डे कर रहे हो तो आपको चार्ट देखना चाहिए 10 मिनट्स का, 5 मिनट्स का, 30 मिनट्स का आपको चार्ट देखना चाहिए। तो इफ आई एम गोइंग टू कन्वर्ट दिस इनटू द 10 मिनट्स चार्ट, तो 10 मिनट्स में देखो ये इसकी प्राइस मूवमेंट क्या हुई है। देखो आज ये जो देख सकते हो ये टाइम आप 18 अगस्त, टाइम फ्रेम 10 मिनट का है। मतलब यहाँ पे अराउंड व्हाट प्रोडक्ट 15.25 एट दैट टाइम द प्राइस मूवमेंट के देखो ये बुलिश बार चार्ट है। उसके पहले 15 को अराउंड ये बेरिश बार चार्ट है। देन अगेन उससे पहले अगेन ये बेरिश है। मतलब हर 10 मिनट में टाटा मोटर्स के स्टॉक्स ने क्या क्या प्राइस मूवमेंट किया है। देखो 3-5 को अराउंड ये स्टॉक प्राइस कम हुई है अराउंड 677 टू अराउंड 675.91 समथिंग। मतलब इन दैट पीरियड ऑफ टाइम, इन दैट 10 मिनट्स ऑफ पीरियड, ये हर एक बार जो है 10 मिनट्स टाइम पीरियड का है। देखो बिकॉज यू हैव सेलेक्टेड हियर 10 मिनट्स। अगर हम इसको 5 मिनट का करेंगे तो 5 मिनट का दिखेगा आपको, राइट। ये 5 मिनट्स की बार है, राइट। दिस द 3 ओ क्लॉक का है बराबर। ये 2:55 का टाइम पे क्या प्राइस मूवमेंट हुई है ये दिखाता है। सो इन दैट वे वी कैन सी the bar chart is more informative than the line chart. Okay, then the next important thing that we are going to understand, and that is most popularly used, and that is what? The candlestick chart. Abhi candlestick chart is very important because that is mostly used by the traders and the investors in the stock market to take investment decisions and for the short term trading. So candlestick chart क्या होता है? Candlestick chart is most popularly used among the technical analysis and it represent the 4 data points. yes, जैसे बार चार्ट में ये 4 पॉइंट कंपोनेंट हमें देखने को मिलते हैं, हाई प्राइस, लो प्राइस, ओपन प्राइस एंड क्लोजिंग प्राइस, दैट वी कैन सी ऑन द बार चार्ट। वैसे ही हमें ये अलग 4 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट वी कैन सी इनटू द कैंडलस्टिक चार्ट। लेकिन कैंडलस्टिक चार्ट आर मोर विजुअल, वो हमें अच्छी तरीके से दिखते हैं बिकॉज बार चार्ट एक खाली एक लाइन होती है, उसको 2 टिक होते हैं, राइट, राइट और लेफ्ट टिक, जो इंडिकेट करते हैं ओपन एंड क्लोज प्राइस। लेकिन यहाँ पे कैंडलस्टिक चार्ट यूज द कलर कोडिंग एंड दैट इंडिकेट्स द प्राइस डायरेक्शन। मगर मतलब अगर ग्रीन कलर है तो इट मींस the price is moving upside, it's a bullish candle। और अगर ये रेड कलर है it means the price is going down, it means it's a bearish candle। okay, so the falling candlestick is typically shown by the red color and the rising candlestick generally displayed with the green color, white color or the transparent body। okay, so generally in the bearish candle what happened, the price open at high and the close at low। okay, suppose the price open at 100 and close at 60 rupees, it means the price is declining here and that candle is presented with the red color। then in the bullish candlestick what happened, generally the price open at low and the close at higher। मतलब the price open at suppose 50 rupees and close at 90 rupees, मतलब price is increased from 50 to 90। so in that way generally that candle is presented with the green color और उसको हम bullish candle कहते हैं।
Okay, now as we can see here, the why this candlestick are more visual, because जो भी प्राइस मूवमेंट होती है into the chart and that presented with the body, because यहाँ पे बॉडी का शेप होता है, रियल बॉडी का शेप होता है, मतलब ओपन और क्लोज प्राइसेस के बीच में जो भी डिफरेंस है ना, दैट इज प्रेजेंटेड विद द body. Okay, that I will show you. You can see here, this is the bullish candle. As you can see that we were discussing, ये जो स्टॉक है बुलिश कैंडल क्यों है, बिकॉज यहाँ पे क्या हुआ है, द स्टॉक ओपन एट व्हाट प्राइस, 92। देखो यहाँ पे ओपन हुआ है, दिस इज द क्लो ओपन प्राइस, एंड there are certain price movement fluctuation in there and ultimately close at the price of what, 100। मतलब प्राइस ओपन कितने को हुआ, 92 पे, और एट 330 ये क्लोज कौन से प्राइस पे हुआ है, अराउंड 100 रुपीज को। सो द प्राइस इज मूविंग अप साइड एंड दैट इज प्रेजेंटेड विद, दिस इज द बॉडी, दिस इज द रियल बॉडी। ओके, तो जो भी डिफरेंस है बिटवीन द ओपनिंग प्राइस एंड द क्लोजिंग प्राइस, दैट इज प्रेजेंटेड विद दिस बॉडी। नाउ एज यू कैन सी, जैसे कि हमने देखा कि आज सपोज मान लेते हैं प्राइस ओपन हुआ कितने प्राइस पे, 92 पे, ये 92 है, सपोज यहाँ पे मान लेते हैं प्राइस ओपन हुआ at 9:15, then there are certain price movements are there, because मार्केट 3:30 बजे तक चलेगा। तो क्या हुआ, ऐसे प्राइस मूवमेंट हो गए और प्राइस नीचे चले गई, कितने लेवल पे, ये 89 रुपीज पे चली गई। सपोज मान लेते हैं ये कितना बजे, 11 बजे प्राइस ये 89 रुपीज पे चली गई, एंड आफ्टर दैट अगेन देर आर सर्टन रिकवरी आई, और अगेन दिस प्राइस हैज इंक्रीज्ड। सपोज मान लेते 2:30 बजे ये प्राइस कहाँ पे गया, 103 रुपीज पे गया, मतलब इसमें हाई कितने का बनाया, 103। एंड अगेन 2:30 ये प्राइस अगेन स्टॉक, देयर आर सर्टेन मूवमेंट्स आर देयर, and ultimately at 3:30 the price, the stock price closed at 100। तो देखो from 9:15 to 3:30 जो भी चेंजेस हुए हैं इस स्टॉक के अंदर, and that is presented here with the help of this body, with the help of this bullish candle। मतलब प्राइस ओपन हुआ 92 पे, क्लोज हुआ 100 पे, इसने हाई कितने का बनाया, 103, और इसने लो कितने का बनाया, 89, राइट। तो इन दैट में यही आप यहाँ पे देख सकते हो, ऑल दिस 9:15 टू 3:30 के अंदर जो भी प्राइस मूवमेंट हुए हैं, दैट इज प्रेजेंटेड विद द हेल्प ऑफ दिस बुलिश कैंडल। ओके, सो दिस इज कॉल्ड एज अ बुल कैंडल और बुलिश कैंडल। ओके, सो दिस इज द, इसको जो ये जो लाइन है ना ऊपर, ये जो ऊपर लाइन है ना, इसको हम विक कहते हैं, और वी कैन से द अपर विक और द अपर शैडो ऑफ द कैंडल। और ये हाई प्राइस है जो 103 है, और ये जो बिलो जो पार्ट है ना, ये बॉडी के नीचे ये जो कलर रेड कलर से जो दिखा रहे हैं ना, दैट इज द लोअर विक कह सकते हैं इसको, या फिर लोअर शैडो। और सबसे लोवेस्ट प्राइस कहां तक गई थी स्टॉक की, अराउंड 89। तो दिस इज द अपर विक, दिस इज द लोअर विक, दिस इज द रियल बॉडी ऑफ द कैंडल, दिस इज द हाई प्राइस, दिस इज द क्लोज प्राइस, this is the open price, and this is the low price। it means the bullish candle के अंदर all the price movement is presented, because in this bullish candle what happened, the price open at low, open at low, open at lows here, and the close at 100। so this is the bullish candle। okay, now we'll next see that is a bearish candle। bearish candle bullish candle के अपोजिट होता है। यहाँ पे क्या हुआ है कि प्राइस जो स्टॉक ओपन एट 100, here you can see the stock open at 100
बट एट द एंड ऑफ द डे 3:30 को स्टॉक क्लोज हुआ है 92 पे। तो यहाँ पे क्या हुआ है, द प्राइस हाई प्राइस पे ओपन हुआ स्टॉक और क्लोज हुआ है लो प्राइस पे, तो इट मीन्स दिस इज द बेरिश कैंडल because price has gone down. In the bearish candle, what happened? Generally, the stock open at high, but the close at low level. We can see here, suppose the price open at 100 rupees here at uh, 9:15, and then again there are certain price movements are there. The stock has gone down to around 89, सपोज 11 बजे ये स्टॉक चला गया 89 रुपीज पे, और अगेन ये स्टॉक ऐसा ऊपर बढ़ के इसने हाई बनाया कितने का, 103, 103 at around suppose 11:13. Then again ultimately at the end of the day the stock close at what price, 92, मतलब ओपन हुआ है 100 को और क्लोज हुआ है 92 को। तो ऑल दिस प्राइस मूवमेंट इन द डे that is presented with the help of this body. So what is the difference between the open price and close price is presented with this body, and this you can see this is the high price, ये stock अराउंड 11-13 को मतलब सबसे हाई कहाँ पे गया था, 103 पे, और इसने सबसे नीचे गया था अराउंड 89 रुपीज के, 89 रुपीज पे। सो इन दैट वे वी कैन अंडरस्टैंड हियर द स्टॉक प्राइस के अंदर जो भी प्राइस मूवमेंट होते हैं दैट आर कैप्चर्ड ओनली इन द वन कैंडल। सो दिस इज द अपर वीक ऑफ द कैंडल and this is the lower week of the candle. Now as you can see here, we'll understand this the candlestick chart as well in as in the with the help of chart really. So as you can see this is the bar chart, we are seeing we are converting this chart into the day candle। तो ये देखो आप ये देख सकते हो ये लास्ट के दो बार चार्ट है ना वो आपको रेड कलर में दिखाई दे रहे हैं, और लास्ट थर्ड कैंडल थर्ड जो बार है वो ग्रीन कैंडल है। तो उसको हम कन्वर्ट करेंगे किसके अंदर, कैंडल्स के अंदर। द सेम यू कैन सी ये लास्ट के दो बियर कैंडल है और ये लास्ट थर्ड बुलिश कैंडल है। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये देखो आज ये जो स्टॉक है ना इसके अंदर क्या मूवमेंट आया है, इट्स ओपन एट दिस लेवल 676.09 और क्लोज हुआ यहाँ पे। ओके, मतलब जो भी डिफरेंस है इन बिटवीन द ओपन एंड क्लोज इज प्रेजेंटेड विद दिस बॉडी, और ये अपर वीक है, वो अपर वीक बहुत ही बड़ी है। ये स्टॉक कहाँ पे गया था, अराउंड 684.85 और सबसे क्लोज गया था अराउंड 672.92। सो दिस इज द डे के अंदर जो भी प्राइस मूवमेंट हुई है आज इस टाटा मोटर्स के अंदर, दैट इज प्रेजेंटेड विद हेल्प ऑफ दिस कैंडल। और ये बेरिश कैंडल है बिकॉज ये आज ओपन हाई पे हुआ है और क्लोज लो पे हुआ है। द सेम वे एज यू कैन सी ये लास्ट डे मतलब कौन सा डे है देखते हैं, एक ये डे आप देख सकते हैं 13 अगस्त को क्या हुआ है, ये स्टॉक ओपन हुआ है कहाँ पे, यहाँ इस लेवल पे, और क्लोज हुआ है दिस लेवल पे, राइट। और अपर भी किसी थोड़ी बड़ी है और लोअर भी बहुत ही छोटी है, इट्स नेग्लिजिबल। यू कैन सी, मैं थोड़ा आपको जूम करके दिखाता हूँ, देख रहे हो आप इसकी लोअर विक बहुत ही छोटी है और अपर विक ज्यादा है, राइट। इन दैट वे दिस इज द बुलिश कैंडल और दिस इज द बेरिश कैंडल। और ये कौन सी तारीख की है, 12 अगस्त की कैंडल है ये टाटा मोटर्स की। अगेन ये कौन सी कैंडल है, दिस द 11 अगस्त की बुलिश कैंडल है। सो इन दैट वे वी कैन अंडरस्टैंड द कैंडल and all the price fluctuation or the price movement into the stocks
are presented with the help of candle. So there are two types of candles are there. This is the green candle जिसको हम बेरिश कैंडल कहते हैं, रेड कैंडल जिसको हम बेरिश कैंडल कहते हैं, और ये ग्रीन कैंडल है जिसको हम बुलिश कैंडल और बुल कैंडल कहते हैं. So these are the types of chart that we have learned. As in short, again, as you can see, this is the bullish candle because open at low and close at high. This is the bearish candle or bear candle, open at high 100 and close at 92. So this is all about the different types of the chart that we have learned. There are three types of charts are there. The one is the most popularly used, that is the candlestick chart, then second bar chart, and third is about the line chart. After understanding this the different types of chart, also we have differentiated the difference between these three types of chart with the help of their features, strength, and the limitations. Also this chart we are analyzing to understand the trends of the stock price movement. We are understanding the trends, whether the price moving upside or to the downside. So and with the help of the chart, especially into the technical analysis, traders are using these different types of chart for the informed investment decisions or the trading purpose. So this is all about the types of chart. Thank you. Happy learning.